Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry, and as we know that we are doing environmental analysis, and in this lecture we will see how we can select a method for analysis. This is going to be a critical and important lecture. So we have done up till now sampling. We have discussed about transport and storage. We have also seen that how we can treat the sample in the previous lectures, and now we will see, depending upon our requirement, uh, what method of analysis we should decide. So the criteria which will determine the analysis method, this will depend upon expected concentration of analyte in the sample. यानी वो जिस क्राइटेरिया पे मेथड ऑफ एनालिसिस की सिलेक्शन डिपेंड करेगी, उसमें सबसे पहला क्या है कि एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द सैंपल, कि हमारे सैंपल के अंदर एनालाइट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो सकती है। तो इसके लिए ज़ाहिर है पहले हमें एक्चुअली स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, कुछ रफ एक्सपेरिमेंटेशन जो है परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि सैंपल के अंदर एनालाइट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। और फिर अगर तो कुछ ज़्यादा मिकदार में एनालाइट की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तो हम सिंपल मेथड एनालिसिस के यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेविमेट्रिक, टाइट्रीमेट्रिक वगैरह। लेकिन अगर एनालाइट की कंसंट्रेशन सैंपल के अंदर बहुत कम है, देन वी हैव टू यूज़ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स, जो कि कम से कम मिकदार में भी एनालाइट की कंसंट्रेशन को सैंपल के अंदर मेजर कर सकें। Then number of samples to be analyzed. So this is also an important question, कि कितने samples हमने analyze करने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसी के लिहाज से हमें cost of analysis की estimation लगानी पड़ेगी कि हमारे पास कितना capital present है, और उस लिहाज से हमें अपने experimentation को डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा time that can be devoted to the analysis, this is also an important factor. And then the cost of analysis, as I have already discussed. So these are the four factors which can decide, on the basis of which we can decide that which method of analysis which we should use. अच्छा जी, अब इसमें जो मेथड ऑफ एनालिसिस हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, अब क्लासिकल में क्या है, टाइट्रीमेट्री एंड ग्रेविमेट्री, जबकि इंस्ट्रूमेंटल में है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, क्रोमेटोग्राफिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इसके अलावा एक और कैटेगरी जिसके ऊपर आप मेथड ऑफ एनालिसिस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, रिस्पांस बेस्ड। ठीक है, अब रिस्पांस, इसकी बेस पे मेथड ऑफ एनालिसिस को हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्पेसिफिक, सिलेक्टिव एंड यूनिवर्सल। तो जो स्पेसिफिक मेथड है, दिस विल रिस्पॉन्ड टू ओनली वन एनालाइट विच वी वांट टू डिटरमिन, और इसमें ये एक ऐसा मेथड होगा विच विल नॉट प्रॉन टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर, यानी दूसरा कोई भी सब्सटेंस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, तो जो एनालाइट हम डिटरमिन करना चाहते हैं, इस एनालाइट को दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, और उस प्रोटोकॉल के मुताबिक, based upon our previous knowledge and experimentation, then we decide actually that the analyte we want to determine, this will not be affected by the presence of other substances in the sample. Then selective respond to certain classes of analytes. ठीक है, अब इसमें क्लास ऑफ एनालाइट्स आ जाएगा, यानी दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो देखें, जितना स्पेसिफिक मेथड होगा वो उतना ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। नॉट नेसेसरली बट मोस्ट ऑफ्टन, ज़रूरी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छा, अब सिलेक्टिव जो है मेथड, वो क्या होता है, दिस रिस्पॉन्ड टू सर्टन क्लासेस ऑफ एनालाइट्स। ठीक है, और दिस मे बी प्रॉन टू सम इंटरफेरेंस। देन यूनिवर्सल, दिस रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लासेस ऑफ एनालाइट्स। तो ये तमाम के तमाम एनालाइट्स की क्लासेस को रिस्पॉन्ड करेगा।
Okay, so examples of method of analysis, titrimetry, or we may also call it as volumetric analysis. So this is the apparatus which we use, and we are very familiar with this apparatus. This is the measuring flask, and this is the uh, apparatus which we use. मेरे जहन से निकल गया इसका नाम क्या होता है, ब्यूरेट, ठीक है। तो ये ब्यूरेट है और ये आपके पास टाइटेशन फ्लास्क है। टाइट्रीमेट्री में हम ये दोनों मेन अपरेटस जो है यूज़ करते हैं। दिस इज सिंपल, इनएक्सपेंसिव, रैपिड, एक्यूरेट। Okay, yeah, these are the characteristics. This is also inexpensive, but you may say that this is not so rapid. ये इतना भी rapid नहीं है, और accuracy इसकी depend करेगी कि जो केमिस्ट इसको परफॉर्म कर रहा है वो इसकी परफॉर्मेंस में कितना एलिजिबल है, कितना काबिल है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी इस बात पे डिपेंड करती है। और इसमें इट रिक्वायर्स द मोस्ट ऑर्डिमेंट्री ऑफ लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर, ठीक है। इसमें सिर्फ बुनियादी से लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ब्यूरेट्स, पाइपर्स, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एंड दीज आर अवेलेबल इन ऑल लेबॉर्ट्रीज। Useful for determining analyte concentration at levels greater than 1 milligram per liter। तो ये 1 मिलीग्राम पर लीटर तक एस्टिमेशन कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है एनालाइट को। और एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए एक्चुअली ये मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल एनालिसिस में जो पोllूटेंट्स हैं, जो एनालाइट्स हैं, वो इससे बहुत कम मिकदार में भी वो हाईली पोल्यूटेड कंसिडर किए जाते हैं या पॉइजनस कंसिडर किए जाते हैं। तो दिस इज ऑफ लिमिटेड यूज फॉर ट्रेस कंपोनेंट एनालिसिस। तो अगर हमें ट्रेसेस में एनालाइज करना है एनालाइट को विच आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस, this will not be very much useful. Then we have gravimetric. Again, this is inexpensive, this is accurate. This is the apparatus which we use for gravimetric analysis, and this requires the minimum of laboratory equipment, can be carried out in all laboratories. These are the advantages, and the disadvantages are it is tedious, slow. Okay, so these are the two disadvantages. So this is an overview of this lecture. Method, titrimetry, इसका principle क्या है? Addition of a standard solution to a sample until reaction is complete as shown by the color change in added indicator. Sub classes इसकी हैं neutralization, precipitation, complexation, reduction, oxidation. All these reactions, these can be performed by means of titrimetric analysis. Gravimetry, अब ग्रेविमेट्री जो एनालिसिस है इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ एनालाइट आउट ऑफ सॉल्यूशन एंड वेइंग द प्रोडक्ट। So there is no more subclasses for gravimetric analysis. Simply we have to precipitate the analyte and then we will weigh the product. Then we have spectroscopy. This is of particularly importance nowadays for the estimation of environmental analysis, and we will go in detail actually of the spectroscopic environmental analysis techniques. Interaction of electromagnetic radiation with sample, and we will see actually in detail in the next lectures that how electromagnetic radiations they can interact with the sample for the determination of environmental pollutants. और इसकी सब क्लासेस में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और emission spectroscopy. And then chromatography again is an important technique, ठीक है। इसमें separation of component in a mixture as they move down a column. So we have actually already know about that, but we will see in detail about gas chromatography and ion chromatography, that how these chromatographic techniques can be used for the determination of environmental pollutants in the sample. And then electrochemical जो method है उसमें we measure the electrical properties of the sample, और इसकी सब क्लासेस हैं आयन सेलेक्टिव, इलेक्ट्रोड्स एंड वोल्टामेट्री। Thank you very much for watching this lecture. This was actually an important lecture. You may say this is an introductory lecture about the
environmental techniques which we can use for the determination of analytes in the environmental samples. और अगले लेक्चर्स में हम इन टेक्निक्स को खासतौर पे क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स किस तरह यूज़ की जाती हैं तफसील से स्टडी करेंगे. Hope you have enjoyed this lecture. If you are benefited from this lecture and you have not subscribed up till now, please subscribe, like and share. Thank you very much.